Dear student, Assalamu alaikum. Now start name of Allah. Today the date is 28 April 2020. Date is the subject math class 4 exercise 2C page number 30 plus 31. Exercise 2C number 2B exercise 2C start करें. First question fill in the blanks. Fill in the blanks fill करें. Part number A dash is a factor of all the numbers. Only one is a factor of all the numbers. So fill in the blanks answer is 1. 1 is a factor of all numbers. No other number are factor of every number. सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो फैक्टर है तमाम नंबर्स का. बी फैक्टर्स ऑफ 6 आर डैश. अब 6 के कौन कौन से फैक्टर में कौन कौन से टेबल जाते हैं. तो 1 2 3 एंड 6 ये है फैक्टर्स 6. और नंबर सी 1 2 आर फैक्टर्स ऑफ डैश. तो सिंपली 2 1 2, ये दोनों सिर्फ 2 के फैक्टर हैं. और नंबर डी द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड itself. यानी 20. 13 is a factor of itself. 13. These are the fill in the blanks. Question number 2 true or false. True or false. Part number A 7 is a factor of 45. Now 7 is not divided by 45. So it is a false. Part number B if a number divides another number completely. यानी कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर पर completely divide होता है, then the first number is a factor of the other number. First number second number का factor होता है. जी हाँ, true. 6 and 8 have an equal numbers of factors. 1 2 3 and 6 4 factors. 1 2 4 and 8 4 factors. 6 और 8 के दोनों के 4 4 फैक्टर बनते हैं. दिस आंसर इज ट्रू. अ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. एक नंबर अपना भी फैक्टर होता है. बिल्कुल ही अपना फैक्टर होता है. 45 इज अ फैक्टर ऑफ 9. नो, 45 इज नॉट डिवाइडेड बाय 9. सो आंसर इज फॉल्स. Now dear students, let's start the next question of exercise 2C page number 31 class 4. Question number 4 find the factors of the following numbers. इन numbers के बाद में factors. Factors mean इनमें कौन कौन सा number completely divide होता है जिसका remainder 0. 9 divided by 1 is equal to 9. Remainder is 0. Then 9 divided by 3, 3 3s are 9, 3 remainder 0. Then 9 divided simply. These are factors. बाकी रिपीट करेंगे फैक्टर. अगर आप देखें कि 9 divided by 9 answer is equal to 1, remainder is 0. So these three are the factors of 9. Now 1 3 and 9 are factors of 9 because it's completely divided by 9 and no remainder are remainder is 0. Then 11 divided by 1 is equal to 11, remainder is 0. And 11 divided by 11 is equal to 1, remainder 0. No other number are not divided by 11. So factor is 1 and 11 are factors. Part number C 18 divided by 1 is equal to 18, remainder 0. 18 divided by 2, 2 9s are 18, remainder 0. 18 divided by 3, 3 6s are 18, remainder 0. 18 divided by 6, 6 3s are 18, remainder 0. And 18 divided by 9, 9 2s are 18, remainder 0. 18 divided by 18, 18 1s are 18, remainder 0. Now the factors are 1 2 3 6 9
and 18 are factors. Now बिल्कुल ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपने नंबर जिस पे डिवाइड करना है, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और जिसका रिमाइंडर जीरो बचे वो उस नंबर का फैक्टर होगा। 21 डिवाइडेड बाय 1, 21 रिमाइंडर जीरो। देन 21 डिवाइडेड बाय 3, 3 7s are 21 रिमाइंडर जीरो। नेक्स्ट नंबर 7 रिमाइंडर जीरो एंड 21 divided by 21 1 remainder 0. Now factor is 1 3 7 and 21 are factors. Again repeat, आपने नंबर्स डिवाइड करने, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो उसका फैक्टर होगा और जिसका रिमाइंडर जीरो बचे। रिमाइंडर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन डन बाय योर सेल्फ. Now dear students, let's start the next question of exercise 2C class 4. Question number 5, write yes or no. Yes or no में आपने इसका आंसर देना है। पार्ट नंबर ए, इज 12 a factor of 36? क्या 12 36 का फैक्टर है? पहले आपको बता चुके हैं कि फैक्टर्स के लिए आपने डिवाइड करना है, जिसका रिमाइंडर जीरो आएगा वो फैक्टर बनता है, रिमाइंडर जीरो ना हो तो वो फैक्टर नहीं बनता। 36 डिवाइडेड बाय 12, 12 3s are 36, remainder is 0, तो 12 फैक्टर है तो आंसर इज यस। इज 7 a factor of 45? 45 डिवाइडेड बाय 7, 7 6s are 42, remainder 3. This is not a remainder 0, is not a factor, answer is no. Is 6 is a factor of 66? 66 divided by 6, 11, remainder 0, remainder 0, answer yes. Is 20 a factor of 100? 100 divided by 20, 25 is a 100, remainder 0, answer yes. Is 16 a factor of 64? 64 divided by 16, 16 4s are 64, remainder 0, remainder 0, answer yes. Let's start the next question. Question number 6, last question of exercise 2C. Write down the factors. इन नंबर्स के फैक्टर्स बनाएं. How many factor does each number? और ये भी बताएं कि हर एक के कितने फैक्टर्स बनते हैं. Now factors, now that 25 divided by 1 is equal to 25, remainder 0. 25 divided by 5, 5 5s are 25, remainder 0, and 25 divided 25, 1, remainder 0. So 1, 5 and 25 are factors. Total factors of 25 is 1, 2 and 3. Part number B, 36. 36 divided by 1, 36, remainder 0. 36 divided by 2, 18 2s are 36, remainder 0. 36 divided by 3, 12 3s are 36, remainder 0. Then 36 divided by 6, 6 6s are 36, remainder 0. Next number 36, 36 divided by 4, 4 9s are 36, remainder 0. Now 36, next number is 9, 4, remainder 0. 36, next 9, 12, 3, remainder 0. 36 divided by 18, 2, remainder 0, and 36 divided 36, 1, remainder 0. So factor is 1 2 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. Total factors of 36 is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9.
पार्ट नंबर ई 45 डिवाइडेड बाय 1 45 रिमाइंडर 0 45 डिवाइडेड बाय 3 15 रिमाइंडर 0 45 डिवाइडेड बाय 5 9 रिमाइंडर 0 45 डिवाइडेड बाय 9 5 रिमाइंडर 0 45 डिवाइडेड बाय 15 3 remainder 0 and 45 divided by 45 1 remainder 0. So 1 3 5 9 15 and 45 are factors. Total factors of 45 is 1 2 3 4 5 6. Done this question, remaining parts of this question done by yourself. I hope you are very well understand for this exercise to see only factors. Factors means divided the number, the remainder is equal to 0 is called a factor. इस नंबर को डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर 0 बचे वो उसका क्या होता है फैक्टर. और 1 ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर